आज हम बात करेंगे हाउ टू हैक वाईफाई पासवर्ड और एंड्रॉयड फोन। तो इसके पहले आपको जानना पड़ेगा वाईफाई कितने टाइप का होता है, वाईफाई का सिक्योरिटी कितने टाइप का होता है एंड इसका पासवर्ड को हैक करना आसान है या नहीं। लेट्स गो, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए हाउ यू एवर वंडर इफ यू पॉसिबल टू हैक ए वाईफाई कनेक्शन पासवर्ड ऑन एन एंड्रॉयड फोन विदाउट एनी स्पेशल ऐप। सो हैकिंग द पासवर्ड ऑफ any Wi-Fi connection is not easy by any means. However, it is not impossible as well. There are many methods with which can you hack Wi-Fi password. So if you want to know how to hack a Wi-Fi password using Android phone, so keep listening. Password security on Wi-Fi connection की हम बात करें तो पहला नंबर पे आता है WEP। इसका फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इसके बाद आता है WPS वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप एंड WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो WEP क्या होता है? इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया कि वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है। इज द मोस्ट commonly used method for Wi-Fi security used across the global and however it's considered to be weakest from security and is the very easy to crack into as well। और WPS जो होता है वो Wi-Fi protect setup is considered to be difficult to hack into, however it required expert hackers to crack it। आम आदमी इसके वो हैक नहीं कर सकता। और WPA जो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है, what are the method to hack Wi-Fi password on Android phone without an app? This thing is they are not particular method to hack Wi-Fi password without an app. There are app with which you can hack Wi-Fi password easily though. So there was a few steps that you need to follow. One such app is WPS connection, which can bypass the security of a Wi-Fi network that has enabled WPS security. If you find Wi-Fi connection close to your which was secured with WPS connection, you can easily connect it to anyone does network and it's give to easy access to a Wi-Fi network without a need for any password। And WPS or WPA tester is a widely used Android app for hacking into Wi-Fi। One of the reason for its popularity is that it's a very easy to use and only a few steps are required to hack for a password। And the USP is the app is that work on an unrooted phone is well, and even if your phone is rooted it will still work albeit with some extra features। के बाद आता है Android Dumper app। इस app also great app for having into Wi-Fi password on an rooted device। So if you don't want to or unable to rooted your device, this app will securely work for you and become an Android app works only on rooted device। This one drawback, the one drawback of this app that is that you will need to have another app named River for using the app properly, and the complete process of hacking may take a couple of hours, so that time depend on the length and complexity of password। So hacking a Wi-Fi password is not easy, but surely the above mentioned app can you help greatly। There are options for both rooted and unrooted Android device, however its probability of a rooted phone of hacking into a network connection is much greater than an unrooted phone। So मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि दिस इंफॉर्मेशन ओनली एंड वन एजुकेशन पर्पज के लिए। सो हैकिंग टोटली इलीगल है, इसको कोई ऐसे मत काम करना कि आपको जेल जाना पड़ेगा। और मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी दी एजुकेशन पर्पज के लिए, सो इसको आप प्रैक्टिकली करने की पब्लिक प्लेस पे कोशिश मत करना, क्योंकि ये टोटली इलीगल है। इसके जेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।